from Airy Souls. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, whichever part of the world you are. So we have started a Spiti expedition today, a couple of hours back. We are on the Eastern Peripheral Highway. We started from Noida and we're reaching Murthal in a couple of hours from now. So far so good. The journey has been pleasant. The only thing is that it has been raining, but we are enjoying the weather, and inch by inch we are just moving on the road. There's no traffic as such. Overall, it's good, and we do not find any traffic even in the next few kilometers from here. And with me, I have my husband Atanu Bhattacharya, who is driving all the way, and I have my son Siddharth Bhattacharya. Say hi to everyone. So as we reach Murthal, we will be again giving you updates about the traffic and how it was and what's the feeling all like. So far we are excited. The entire feeling is yet to sink in. So we have reached Murthal now, and with us we have our childhood friends, Rajesh, his wife Manisha, and you can see, there's a lot of traffic on the street. We are just waiting for the third family to join us, and just relaxing our legs, and that's what. Good morning everyone. Good morning from Kasauli. Our first stop was at Kasauli yesterday. It has been raining here, continuous barish ho rahi hai, and the view is lovely. We are staying at Sky Villas. It's right bang on the road. We did not take any hotel inside just to save some time. तो हमने सोचा कि रास्ते के ऊपर ही रहा जाए, so that we can easily reach our next destination without any further delay. हमारा अगला डेस्टिनेशन है चिटकुल, बट देखी जाएगी पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि काफ़ी हैवी बारिश हुई है कल रात को. So depending upon what the condition of the road is, we would be taking a decision on the way. पर फ़िलहाल enjoy कीजिए खूबसूरत नज़ारा कसौली का. काफ़ी दिनों बाद हम यहाँ आ रहे हैं. Almost I think 10 years, because we were exploring other places in India, and this really looks awesome. Though थोड़ी सी commercialization ज़्यादा हो गई है यहाँ, but the beauty of the nature is still intact. सामने से एक ट्रेन लाइन जा रही है. कुछ देर पहले एक ट्रेन भी जा रही थी, तो नज़ारा और भी ऑसम था. ओके गाइस, विल कीप यू अपडेटेड एज वी स्टार्ट. वी आर अबाउट टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स. सुबह के बजे हैं 6:30, और हम ये चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द चिटकुल पहुँचे विदाउट एनी फर्दर डिले. Hi everyone, it's 7:20 now. We have started from Kasauli. We are heading towards Solan, and from Solan we'll be reaching Chitkul. चिटकुल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं आज, but let's see. It's raining, as you can see. It's still raining, but beautiful view. इसी को नज़र रखते हुए we are all going ahead, keeping fingers crossed that we get a little better weather ahead. Guys, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है. जितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं और भी बारिश बढ़ती जा रही है. आशा कर रहे हैं कि थोड़ी देर में कम होती जाएगी. दो इट इज़ फोरकास्टेड, बट वी आर स्टिल वेरी पॉजिटिव. ये देखिए नज़ारा, भारी बारिश. ये है सोलान बाज़ार जो हम क्रॉस कर रहे हैं. थोड़ी सी ट्रैफिक दिख रही है. दो चीज़, कंटिन्यूस बारिश की वजह से ट्रैफिक बेहद स्लो. आप देख सकते हैं, इट्स मूविंग इंच बाई इंच. बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. देखते हैं आगे चल के कितनी दूर तक बारिश हो रही है. सोलन में रुकने का प्लान था, ब्रेकफास्ट करने का प्लान था, बट अभी पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम. यू वांट टू गो एज मच एज पॉसिबल. भूख भी बहुत लगी है, बट लेट्स सी हाउ वी मैनेज इट. जैसे आप देख रहे हैं, हम ट्रैफिक से निकल चुके हैं, पर मौसम बेहद ख़राब. इट्स कंटिन्यूसली रेनिंग. वी होप टू गेट बेटर वेदर, पर दिख नहीं रही है. जब से चले तब से भारी बारिश हो ही जा रही है. ये देखिए कोहरा. देयर इज नो सनशाइन एट ऑल. काफ़ी दिख रही है. बारिश की वजह से ट्रैफिक तो है, हल्की फुल्की ट्रैफिक है. वी डोंट सी दैट मच ऑफ रश टिल नाउ.
ये आ गए हमारे पराठे, ये देखिए लग रहा है एक ही काफ़ी है हम सब के लिए, मतलब इंडिविजुअली एक ही काफ़ी है। काफ़ी मोटे और काफ़ी स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब खा के बताते हैं आगे that how it actually tastes. We are all struggling to have tea. Everybody wants to have tea ASAP. पराठे बहुत ही स्वादिष्ट हैं, वाकई स्वादिष्ट है पराठे। बटर के साथ ले रहे हैं हम। All of us had an excellent breakfast. Now our tummies are full and now we are heading towards our vehicles. As you can see, the weather is really not encouraging. बहुत ही बुरा हाल है, कोहरा, बारिश, नहीं समझ में आ रहा है कितनी दूर तक ये चलता रहेगा। So we are heading towards Chitkul and our next stop would be... What is our next stop? Our next stop would be Narkanda. राजमा चावल खाने का प्लान है, देखते हैं what's in store for us. But at the moment, the weather is not at all encouraging. बहुत ही कोहरा है, बारिश हो जा रही है, ठंड भी थोड़ी थोड़ी सी लग रही है। तो हम चल पड़े हैं नारकंडा की तरफ। It's zero visibility. Things are getting worse and worse. Zero visibility, that too on the mountains. देखते हैं। However, मौसम का लुत्फ उठाते हुए चल पड़े हैं हम। बारिश तो रुक गई है, but it's foggy, it's कोहरा, zero visibility, बड़ी मुश्किल से दिख रही है रास्ता। A little bit of relaxation and friends rejoining again on this trip. A beautiful view indeed. Actually ये वाला व्यू लेना चाहिए। कोहरा बहुत है अभी भी। इधर इधर आता है। जल्दी करना पड़ेगा, तो पूरा पीक जाएगी। ये वाला ले। ये रास्ता पीछे से आ रहा है ऐसा। रोड से लेना पीछे। Friends rejoicing. All the three are batchmates, Rajesh, Atanu and me. We studied in the same school till class 10. And going out with them is a different experience altogether. Childhood friends. Bringing back a lot of memories. Siddharth taking a group photograph of three of us. Here comes a beautiful view of coniferous trees. Absolutely gorgeous. Green of the hills. These pine trees. So green, so lush. देखो ना ये क्या हो गया, मैं हैरान हूँ, तुम्हें क्या कहूँ कि दिन ला 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 खोई खोई तुम्ही देखो ना these beautiful place. हम ले रहे हैं कुफरी रोड just to avoid the Shimla traffic. फिलहाल रास्ता काफ़ी अच्छी है, खाली है, ट्रैफिक नहीं मिल रही है, नज़ारे भी सुंदर हैं। Let's hope the rest of the journey is also like this. बारिश की वजह से रास्ते में पानी जमा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। बाकी वादियाँ वैसे ही खूबसूरत। ये पीछे नहीं आ रहा, मैं हूँ मेरे से।
Siddharth, he's there behind. He's not there. Huh? No. They stopped again somewhere, it seems. A lot of civilization that we can see. ब्यूटीफुल सिविलाइजेशन पहाड़ों के ऊपर बनी हुई सुंदर सी छोटी छोटी कोठियाँ. Awesome. क्या नज़ारे, क्या नज़ारे. This was the traffic. भारी ट्रैफिक यहाँ, लोग रुके हुए हैं फोटोज़ लेने के लिए. सुंदर सी नज़ारे आप देख रहे हैं, लोग सारे रुके हुए हैं, सारे खड़े होके नज़ारे ले रहे हैं. ये कुफरी रास्ता है. 10 साल पहले इतनी भीड़ ना होती थी यहाँ. टू मच ऑफ सिविलाइजेशन, ऑफ टू मच ऑफ ट्रैफिक इवन इन कुफरी. This is a bit surprising for me actually. People standing in one place and taking photographs doesn't make sense. पर चलिए ये भी देखने को मिला. आगे सुंदर नज़ारे. We are just 10 kilometers away from Kufri. Hoping to reach in the next 30 minutes. चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए. और यहाँ एक छोटी सी टी ब्रेक, जिसके सामने ब्यूटीफुल नज़ारा दोबारा. बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक. This is the tea stall. We are on our way to Kufri. How many kilometers left for Kufri? Atno, how many kilometers to Kufri? How many kilometers to Kufri? Around 10. Around 10 kilometers to Kufri now. 3 kilometers. How much? 3 किलोमीटर. ओके, ये कह रहे हैं 3 किलोमीटर है. चलिए कंफर्म हो गया. और ये रहे हमारे भैया जो चाय बना रहे हैं हमारे लिए. नमस्ते भैया. काफ़ी ठंड हो गई है यहाँ. काफ़ी ठंड है. हाँ जी, काफ़ी ठंड है. हाँ काफ़ी ठंड है. ये क्या कब से चल रही है? बारिश कब से चल रही है या आज ही हुई है? ये सुबह 4 बजे से. आज सुबह 4 बजे से, इससे पहले नहीं हुई है. आपका शुभ नाम? दुर्गेश. मुर्गेश. ओके, हाय मुर्गेश. ओके, यहाँ मिलती है मैगी, चाय और क्या क्या मिलती है भैया? मैगी, चाय, कॉफ़ी, अंडा, ब्रेड, आमलेट. वेरी नाइस. और हम पी रहे हैं चाय यहाँ. फिर चल पड़ेंगे कुफरी की तरफ. आपको दिखाते हैं आइए और थोड़ी नज़ारे. ये देखिए कितनी सुंदर, कितना प्यारा नज़ारा. चाय के इंतज़ार में. हमारे कैंपर वैन की सेटअप दोबारा देखी जा रही है, स्क्रूटनी की जा रही है. चिटकुल में कैंपिंग करने की. चिटकुल में कैंपिंग करना है. देखते हैं वेदर कैसा रहता है, कितने बजे हम पहुंच रहे हैं. या वी नो. On the left side at the photo taken a tea shop over. You can see our car. 8 बजे तक अगर चिटकुल पहुंचते हैं तो वी डाउट वेदर वी कैन डू कैंपिंग एंड टेंटिंग. फिर तो हमें होटल ही बुक करना पड़ेगा. पर चलिए देखें. Here's a beautiful view that I would like to show all of you. This is an apple garden. You can see the apple on the trees. They've covered it up so that, you know, the vegetation does not get
disturbed. You can see apple on the trees. There you go. So this is what they're protecting with the help of a cover on the top of it. The entire mountain is full of it. We are on our way to Narkanda and we stopped to just take this beautiful scenery that we have come across. Just take a look at this. The entire hill is full of apple trees. What a beautiful sight. उसके पीछे वादियाँ. Isn't our country so beautiful? Take a look at this. We are on our way to चिटकुल, पर हमें नहीं लगता कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे बिकॉज़ बारिश दोबारा शुरू हो गई है. हम जस्ट रामपुर क्रॉस कर चुके हैं. सोच रहे हैं कि जहाँ तक हम जा सके, जहाँ तक रास्ता सही हो, we'll stop there and we'll take a hotel for the night because camping आज शायद ना हो पाए. And tomorrow we'll be heading towards Nako village from there. चिटकुल शायद वापसी में हम करें. But yeah, let's see. It depends upon how the weather is and how the roads are. ये देखिए ब्यूटीफुल नज़ारा, पहाड़ों के बीच बहती हुई नदी. And there's a little bit of civilization as well. We're taking a little bit of rest. Hello, madam. Hi. This is a place I don't know. Even we don't know which place it is. In the midst of something. Yeah, it's some ghost place. Some ghost place between Rampur and Chitkul. Show the river, Satluj. Yeah. I've shown the river Satluj, but yeah, I forgot to mention the name of the river. This is River Satluj. Beautiful one. The water is clean. सोलन के रास्ते में ये सुंदर सा झरना, हम उसी की तरफ जा रहे हैं. बहुत ही सुंदर दृश्य. यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ भी कभी कभी धो लेते हैं. हम आपको दिखाते हैं कैसे ये गाड़ियाँ धोते हैं. ये देखिए, बहुत ही ऊंचाई से आने वाला ये झरना. जो मैं कह रही थी, ये देखिए एक गाड़ी यहाँ जा रही है, शायद धुलने के लिए ही जा रही हो. बहुत ही सुंदर दृश्य. और ये गाड़ी धुलते हुए, पूरी फैमिली वैसी की वैसी बैठी हुई है, और ये गाड़ी धुली जा रही है. एक छोटी सी करेक्शन, ये झरना जो हमने अभी देखा, ये सांगला जाते हुए रास्ते के बीच आती है. मैंने गलती से सोलन बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट. इट्स ऑन द वे टू सांगला.
ये गाड़ी हमारी चेक पोस्ट पे रुकी हुई है अभी, और ये चेक एंट्री करनी होती है. This is the check post where we are standing and we are getting the number of members entered into their books. We have entered into the Kinnaur district. और ये देखिए नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा. ये वो केव है जिसे माउंटेन काट के बनाया गया है. लोग सारे यहाँ खड़े होकर पिक्चर्स ले रहे हैं, नज़ारे का आनंद लेते हुए. और ये पानी से पावर जनरेट होता हुआ दृश्य. ये जो पाइपलाइन आपको दिख रही है लंबी सी, वी आर जनरेटिंग पावर फ्रॉम वाटर. বাচ্চারা এসে গেছে কোথাও তুই আগে যাবে, তুই আমাদের জন্য রাস্তা বানাতে হবে, আসছে পিছনে জড়িয়ে. Long term. JSW is making. It doesn't also maintaining it.